Good morning, dear students. Today, our topic data handling exercise 17.2. So, today question is say question number 4. Question number 4 says the average amount allocated by a family for different items is given below. Represent the data in a bar chart with an appropriate scale. Okay, with a given suitable scale, we have to indicate this in bar chart, in which some items are given and then amount located in percentage. Suppose करो food 15%, transport पे 10%, in healthcare 15%, education 25%, recreation 10%, charity 5%, and savings that is 20%. ओके, मीन्स ये जो फैमिली है, जो उनके पास जो मनी है ना, वो इस तरह से अपने ऊपर वो एक्सपेंस करते हैं वो. So now draw a chart. Here item food, then transport, healthcare, health, education, recreation, charity, okay, and then saving. Okay, here we indicate item, okay, and amount located. Amount located in percentage. Okay, 5, 10, 15. Okay, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, this one is an x-axis and y-axis. Write the name 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Okay, and scale on y-axis 1 centimeter is equal to 5%. Okay, 1 centimeter indicate 5%. So see, in food item, what is the percentage? That is 15%. Is it clear? Transport 10%. यानी जो ट्रांसपोर्ट में जो खर्च हो रहे हैं उनके वो कितने हैं? 10%. What about health? That is 15%. Okay, and what about education? In education they spend 25%. Okay, and then recreation 10%. In charity 5%. And saving that is 20%.
So we draw the bar chart. So on x-axis we indicate item, food, transport, health, education, recreation, charity and saving. फूड में जो फैमिली है फूड के ऊपर अपने जो उनके पास जो मनी है ना 50% खर्च करते हैं फूड के ऊपर। ट्रांसपोर्ट पे कहीं आने जाने घूमने के लिए अपने मनी का 10% यूज करती है। हेल्थ पे 15%, एजुकेशन पे 25%, दैट इज मैक्सिमम। रिक्रिएशन सपोज अगर कुछ काम वगैरह कराना है घर में चाहे कहीं और भी उस पर 10%। चैरिटी कुछ वो दान भी देते हैं एनजीओ वगैरह में कितना 5%। सेविंग क्योंकि सेविंग भी है 20%। इट इज क्लियर। एंड ऑन वाई एक्सेस वी इंडिकेट द percentage 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay. So this question number 4. Write in your copy. Now after this, see question number 5. Question number 5. See, the data given below gives the production of wheat in some of largest wheat producing countries of the world. मीन्स इसमें जो डाटा जो दिए हुए हैं ना वो कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे क्या वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उन कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देन जो डाटा है वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन एप्रोप्रिएट बार चार्ट। हमें क्या करना है, इनको बार चार्ट पे दिखाना है क्या होगा। Is it clear? So same process. First of all, write the axis, x-axis and y-axis. This is x and that one is the y-axis. Here country. First USA. Okay. China. Then India, France, Australia, and then Russia. Is it clear? Here we indicate country. And here production. जो क्या है प्रोडक्शन मिलियन में, ठीक है ना। प्रोडक्शन दैट इज मिलियन मेट्रिक टन, मिलियन metric tons. MMT I have written short form million metric ton में. Is it clear? So now see, we have to take a proper okay. See the proper 10 okay 20 30 40 take some bigger number. Nice. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 okay. Here is the data entry on the home on the website okay. Is it clear?
and it is in y-axis. Which chapter is? Okay. So see, first USA, that is 60. How many ton? That is 60 ton. China 125. 125. 125 lie 130 and 120. Huh? See in the middle. Then India 95. Lie between 90 and 100. Write the chapter name, that is data handling. Okay. Data handling. India is done. India is 95. France, that is 40. Australia 30. Australia 30 and Russia 55. 55 lie between 50 and 60. Okay. So I think question number 5 is complete. First, we indicate country on x-axis and take a scale. Scale on y-axis. 1 centimeter is equal to 10 million metric ton. 10 million metric ton. Okay, we have written the scale also. 0, 0, 10, 20, 30 in y-axis, and now write the weights in million metric ton for each country. Okay, so write down this question also. Next, see question number 6. In this question, first of all we draw the graph, then we will solve this question. See, that is very simple. Question is given in your book also. Oh, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Why? Here is given 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12. Okay, these are the given. This one is indicated the year, and this one is the student.
the exam. Okay, so in 2007 250 students are appeared. 250. 2008 there are 400 students appeared. 2009 550. That is 550 lie between less than 600. And then 2011 500. 2011 750, more than 800. 750, sorry, less than 800. 2012 850. Now these are the given. In each year, the number of students appear for an exam. So the first question is, question number 6, first part. First question says that in which year the maximum number of students appear for the exam. See the chart and tell me कि कौन से साल में सबसे अधिक बच्चे एग्जाम में अपीयर किए हैं. अकॉर्डिंग टू ग्राफ वी कैन सी 2012. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट? 850 स्टूडेंट्स. ठीक है ना? उसी ईयर में सबसे अधिक बच्चे पास किए हैं, एग्जाम जो अपीयर किए हैं. Second one, how many students wrote the exam in the year 2011? 2011 में कितने बच्चे हैं जो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, लिखे थे? तो in 2011 the number of students is 750 students. What is the third one? What is the total number of students who appeared for the exam from 2009 onwards? यानी 2009 के बाद से, ठीक है ना? 2009 onwards यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं जो एग्जाम में अपीयर किए? ऐड कर लेते हैं. 2009 में कितना है? 550 plus 500 plus 750 plus 850. ऐड करें इसको 1000 means that is 2650 स्टूडेंट. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्या हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो 2009 के बाद से 2009 से एग्जाम में अपीयर किए. तो क्या जाएगा आंसर? 2650. क्वेश्चन नंबर 4, what is the increase in the number of students who appeared for the exam in 2007 to 2012? and in 2007 से 2012 में जो बच्चे अपीयर किए हैं कितने बढ़े हैं? ठीक है ना? तो 2012 में कितने हैं? 850. in 2007 में कितने हैं? माइनस कर देंगे 250. then we will find increase in the student. so that is the 600 students. Question number 5 says, 5. 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
What is the ratio of the students who appear for the exam in the last 2 years? लास्ट 2 years में जो बच्चे हैं ना उनका हमें रेशियो बताना है. So in 2011, what is the number of students? 750, and then 850. 0 to 0 cancel. 75 upon 85. Then when we got it 5, 15, 17. 15 upon 17, or you can write 15 ratio 70. Is it clear? So the answer is 15 ratio 70. Now write the question. Okay. First answer is 2012. How many wrote in the 2011 में कितने बच्चे हैं? 750. 2009 से कितने बच्चे क्लियर किए हैं? That is 2650. कितने बच्चे इंक्रीज में जो 2007 से 2012 के बीच में? 600. रेशियो बताना है हमें लास्ट के 2 years का. First then last one. So that is 15 ratio 70. Right? This one. And so exercise 17.2 is complete. Then we start exercise 17.3. Okay.